नज़ीर ज़रूर पेश करता है। शीतल। Absolutely, absolutely. And coming back to studios, we have our guest, Professor Singh. As we were discussing about the sessions today, the one on sustainable development goals and assessing them is the first that is to be held. We have not been able to, the world has not been able to meet the agenda that was set so far, and with the current situation it's becoming all the more difficult and hard. What is your view on this? How do you think can the countries come together and tackle the current challenges? Because this is the very first session that we will have in the P20. You are right, Sheetal. Sustainable development goals are under stress. There are immediate reasons and then there are structural reasons. Immediate reasons very clearly are pandemic and then of course Ukraine war, and now we are in Israel war, which have derailed a lot of decision making and of course implementation. Second is the structural factors, where many of the sustainable development goals to be implemented require coordination and cooperation between developed countries, developing countries and least developed countries. Fundamentally, many of these goals require that developed countries, and they have promised many times, will provide both financial and technical cooperation. Technology transition transfer should happen, but in implementing they have been not able to do that or not willing to do that in that sense. And I think that is where India's focus on digital infrastructure, public digital infrastructure, represents a very interesting example. Traditionally, technology transfers were not allowed, or they were extremely costly or complicated. It was not easy to receive technologies. India today is presenting an example of giving these technologies for free whosoever wants. Whether it is the CoWIN platform or it is online payment platforms which are being used in many countries. An example of a country having developed a certain modern technology platform, digital platform, and is saying it is open to anyone who wants to take it for free. And that's a whole new way of showcasing how sharing technology is going to be beneficially, not just countries that are receiving, but because it is going to benefit the entire humanity in that sense together, and India would be part of that humanity, is a good indicator to developed countries as to how they should fall in line and at least fulfill the promises that they have made. But of course, first of all, we need to bring stability and Ukraine war and Israel war, so that nations can go back to focusing and accelerating, because we have decelerated these. We will be coming back to the studios, but we have another studio set up in Yashobhumi, which is the center of all attraction today. Let's go across to Yashobhumi. It's over to you, Kriti. Sheetal, we thought that it's time to move beyond the Yashobhumi studio to get the glimpses for our viewers from the iconic Yashobhumi building, the architectural marvel of India. And let me request my camera person to pan his camera a bit and show you the arrangements for P20 summit here. Remember, Sheetal, Bharat Mandapam, where India hosted the G20 summit, had enamored the world, and Yashobhumi is set to mesmerize all the speakers and of course the inviting nations, as Prime Minister Narendra Modi is slated to inaugurate the P20 summit today. You know, Yashobhumi is a symbol of Indian hospitality, and it combines heritage with modernity. It mirrors the aspiration of a new India, which is unstoppable. This convention center has been created to accommodate India's anticipated growth into the third largest economy during the next 2 decades. It sets a new standard in architectural excellence, showcasing India's prowess in design and construction. It is not merely a functional space, architectural marvel symbolizing India's commitment to excellence and innovation. It is a testament to the country's ability to execute massive projects. And of course, we know that Yashobhumi is a perfect example of PM Gati Shakti. Yesterday we saw how Honorable Speaker of Lok Sabha travelled from the metro. Today also we know that a lot of guests would be taking metro back to the destination. So this is a perfect example of PM Gati Shakti, wherein we believe that it is not perfect to work in silos. We have to break those silos and work together in cohesion, in coordination. So that's a perfect example. And you can see around me that security has been beefed, and Yashobhumi is all set to welcome. We are correcting the audio. We'll be coming back to you very soon. Let's continue with the chat that we were having. Yes. So indeed, I think the 4 top priorities which are listed today for the meeting of parliamentarians
showcases where India wants to, direct global attention and global efforts. So very clearly, 4 issues that are being underlined are, first of all, focusing on accelerating sustainable development goals, then focusing on women-led development, also accelerating the process of social transformation using public digital infrastructure, and of course transition towards green and clean technologies. Most of them in that sense also lead to dealing with environmental issues, which is the Prime Minister's initiative on LIFE, which is lifestyle for environment. So whether it is women-led development or it is transitioning towards clean technologies or working for sustainable development goals, I think the big challenge that humanity today faces, or our blue planet that today faces, is the challenge of environment. And indeed, some of that can be clearly seen, visible in all 4 priorities that are being put in place for these 2 days of discussions. Started with a discussion, pre-summit discussion. बिल्कुल प्रोफेसर, और जैसा कि आपने बताया कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व करने के साथ साथ पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि अपनी जीवन शैली को पर्यावरण के अनुकूल बनाएं, और भारत में जो मिशन लाइफ है वो पूरी दुनिया तक पहुंच रहा है। कल प्री समिट इवेंट में हमने ये देखा, और आज यशोभूमि में क्या कुछ खास होने जा रहा है। यशोभूमि, वो विशाल भूमि जहाँ से P20 शिखर सम्मेलन का आज आगाज होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे और वहां पर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। क्या कुछ खास वहां पर नजर आ रहा है, जानने के लिए चलते हैं यशोभूमि में मौजूद हमारी संवाददाता कृति मिश्रा के पास। Yes, Shalini, we've been showing the glimpses of Yashobhumi to our viewers, and we've been telling our viewers how security has been beefed in the entire area as the 9th edition of P20 summit would be inaugurated by Prime Minister Modi in just a while. And we know that India is a land of diversity, culture and innovation. It is on the cusp of transformative journey towards becoming a global powerhouse. In this unprecedented era of growth and progress, this iconic venue, that is Yashobhumi, is set to play a very pivotal role in shaping India's tomorrow. This is a world-class facility. It is just not about bricks and mortar here. It represents a vision for India's future that encompasses global competitiveness, economic growth and empowerment, and a deep sense of commitment to the welfare of citizens. You can see the entire area. We've been talking about how it has emerged as a symbol of Gati Shakti. You can hear the sound of airplanes going because PM Gati Shakti focuses on working together in cohesion, in tandem, in coordination. So you can just see that the airport, the international airport, is just 5 minutes away from here. In fact, we have the Yashobhumi metro station right here. You can see this infrastructural development. This certainly puts Bharat Mandapam and Yashobhumi together put India in the league of Singapore, Hong Kong and Shanghai for holding world-class events. So this certainly speaks of how India is progressing, and of course we are focusing on being Atmanirbhar and also being global powerhouse. Back to you, Shalini. बिल्कुल कृति, और कहीं ना कहीं P20 शिखर सम्मेलन एक मौका है पूरी दुनिया को ये दिखाने के लिए कि यशोभूमि जैसा दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भारत में है, और साथ ही साथ ये भारत के नए संसद भवन को पूरी दुनिया के सामने रखने का, भारत की जो लोकतंत्र की संस्कृति है, भारत लोकतंत्र की जननी है, ये पूरी दुनिया को बताने का एक अवसर है। आपके पास आएंगे डॉक्टर प्रोफेसर स्वर्ण, और हम जैसे बात कर रहे थे, हम एनर्जी की बात कर रहे थे कि मेट्रो का इस्तेमाल किया गया। कल लोकसभा अध्यक्ष मेट्रो से वहाँ पहुँचे यशोभूमि, और आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो एनर्जी पर हमारा सत्र है उसके लिए ये एक उदाहरण है, और जो हम पूरी दुनिया को दे रहे हैं कि आप ऐसे संसाधनों का इस्तेमाल कम करें जो सीमित हैं, और मेट्रो से यात्रा करना या मेट्रो से उस जगह पर पहुंचना जहां टाइम बचाता है, वहीं हमारे जो सीमित संसाधन हैं उनकी बचत भी करता है। और इसी पर एक सत्र भी आज होने जा रहा है। जी बिल्कुल शालिनी ने आपने ठीक कहा, ये उदाहरण देकर जो करने की बात है, दिखाना कि इतना बड़ा सम्मेलन, इतने उच्च स्तर का सम्मेलन जो है उसके सभी प्रतिनिधियों को, और प्रधानमंत्री खुद, हमारी लोकसभा के स्पीकर खुद मेट्रो से जाकर सम्मेलन में शामिल होते हैं, तो ये शायद एक ऐसी उदाहरण होगी जो दूसरे देशों को जाहिर है कि इसको ऐसे ही करना होगा जब वो इस तरह के संगठनों का या सम्मेलनों का प्रयोजन करते हैं। तो एक तो ये कि उदाहरण देकर कैसे आप दूसरों को भी
उसमें शामिल करते हैं कि दूसरे देश भी जब इस तरह का कोई कार्यक्रम करें तो वो भी उस उदाहरण को वहाँ अपने आप अपनाएं और उसको रखें अपने साथ। और ये तो रोज़मर्रा के जीवन की हुई बात। उसके साथ साथ भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कोशिशें हैं, जैसे वो चाहे इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात हो, या G20 के शिखर सम्मेलन में जो कोलिशन ऑफ बायोफ्यूल्स की जो बात शुरू हुई, कितने अलग अलग स्तर पर, कितने अलग अलग तरीके से भारत आज एक उदाहरण बनता हुआ नजर आता है कि वो न केवल पूरे विश्व को साथ लेकर ये क्लीन और ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ना चाहता है जी, बल्कि रोज़मर्रा के जीवन में, चाहे वो आम आदमी की जीवन हो या वो हमारे प्रधानमंत्री का जीवन हो या इतने बड़े सम्मेलन का आयोजन हो, किस तरह से आप उसको ये क्लीन और ग्रीन एनर्जी के साथ लेकर उसको आगे बढ़ा सकते हैं और इतने बड़े सम्मेलन को आप सफलतापूर्वक कर भी सकते बिल्कुल हैं। प्रोफेसर। और इसी के लिए वहाँ पर एक प्रदर्शनी भी लगी है जो लाइव पर ही है, जहाँ एक साइकिल लगी है, और कल मैं वहाँ पर मौजूद थी। और जब मैंने एक साउथ अफ्रीका के डेलीगेट को रिक्वेस्ट किया और उन्होंने जब उस साइकिल का आनंद लिया, उन्होंने साइकिल चलाई, उसके बाद वो बहुत खुश थे और उन्होंने कहा कि वाकई में इससे जहाँ मेरी एक्सरसाइज हुई वहीं कहीं ना कहीं एनर्जी सेव करने की जो कवायद है वो भी इससे की जा सकती है। और ये बहुत अच्छा है और इसे हम अपने देश में भी करने की कोशिश करेंगे। So interesting and heartening to see that we are providing and giving these solutions and ideas to the world. True. I think that is an important point. Other than showing cost effectiveness that very often attracts a consumer, we have to increasingly make consumers understand the long-term benefits of transitioning to these new lifestyles, where, for example, the kind of money and discomfort that we invest in our health, if we are using clean and green energy environment, health is going to be much better, longevity is going to increase, our productivity is going to increase, satisfaction and happiness is going to increase. I think that conviction has to be explained and internalized by all of us in that sense. Right. That when we are using bicycle, for example, it's not just that we are saving money in terms of buying a gadget or using it in everyday basis, but how it improves environment of the place where we live, how it improves our fitness levels. Those benefits also need to be understood by all of us, and that is where the lifestyle, the tagline of lifestyle for environment is very interesting, because it is at that level that we all of us need to understand. And I keep saying governments can only facilitate. Actual implementation would require each of the citizens to understand that they are part and parcel of implementing these changes. And unless that happens, leaders can showcase and create examples, like mention was made of Gadkari going to Parliament in hydrogen car, or Prime Minister traveling by metro, first to inaugurate Yashobhumi and now perhaps today again to inaugurate the Parliament Summit. But I think those are iconic examples. They have to be implemented at the level of everyone. Common man and common woman. To be And we also have Professor Ambassador Prabhu Dayal with us, and let's go across to Ambassador Dayal. Ambassador Dayal, it's not just about organizing or hosting the G20 summit. It's not just about hosting the P20 summit. It's very symbolic of a rising India rising as a leader, and we are being watched by friends and foes alike. New profile of India emerging as a global leader has a lot to do with the wisdom and leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi. Your correspondent Pawan Kumar Sharma recited a Sanskrit shlok. So I was reminded of a Sanskrit shlok which I think applies to Prime Minister Modi. Shaile shaile na manikyam, moktikam na gaje gaje, sadhavana sarvatra, chandanam na vane vane. In short, what this shlok means is that wise, sage-like persons are not found everywhere. Our Prime Minister is a sage-like person. And not only is India privileged to have him as its leader at this time, but as the president of G20, he is providing a very wise leadership to the entire world. In particular, he is pointing out that there is a need for consensus-based solutions to complex global issues. And there is a need for
inclusiveness and peace. And that, I think, is what is of fundamental importance. I'm really looking forward to hearing what the Prime Minister says during his inaugural address at the P20 summit, because he will be pointing towards more avenues which the world should take at this extremely complex and difficult time. And Professor Swaran Singh correctly enumerated a number of important aspects which will be highlighted during this P20 summit. But the most important thing is how India will be sharing its successes, how India will be sharing its experiences, because the objective which India has is to make the world a better place, because as Prime Minister has repeatedly emphasized, his belief is Vasudev Kutumbakam, and he wants the entire world to prosper and learn from India's experience wherever possible. बिल्कुल प्रभुदयाल जी, और जहां पूरी दुनिया एकजुट हो रही है, कोशिश कर रही है कि जो वैश्विक चुनौतियां हैं दुनिया के सामने उनका समाधान किया जाए। G20 के दौरान भी इन सब पर चर्चा हुई, और अब P20 शिखर सम्मेलन में कैसे उन नीतियों का निर्माण हर देश में किया जा सके, उस प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं G20 देशों के संसद अध्यक्ष और साथ ही आमंत्रित देशों के संसद अध्यक्ष और जनप्रतिनिधि के तौर पर वो सीधे जनता से जुड़े होते हैं। तो ज़रूरी हो जाता है कि वो जो जनता से काम करवाना है, जो जनता के लिए नीतियाँ बनानी हैं, उसमें उनकी सहभागिता हो। और इसी के लिए इन अंतर्राष्ट्रीय समुदायों से मिलने जुलने के दौरान और इस प्री समिट इवेंट के दौरान भी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 4 देशों के संसद अध्यक्षों से मुलाकात की। इस दौरान क्या कुछ खास रहा, प्रभुदयाल जी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जो अभी जो मुलाकातें चल रही हैं, इसमें जो बहुत अहम मुद्दा है कि किस तरह से दुनिया को एकजुट किया जाए, और जो अभी तक कल शाम के फंक्शन में हुआ उस पे भी अगर हम गौर करें तो यही दिशा दिखाने की कोशिश की गई, किस तरह से दुनिया को एकजुट होकर काम करना है। अब एनवायरनमेंट जो है वो सिर्फ एक देश के अच्छी तरह से कार्य करने से एनवायरनमेंट दुनिया का नहीं सुधरता, बिल्कुल सब देशों को एकजुट होकर काम करना है। तो यही जो बात है वो कल के सेशन में ही भी दोहराई गई, और मुझे उम्मीद है कि जो ये 4 सब्जेक्ट्स पे डिस्कशंस होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें भी यही कोशिश की जाएगी कि किस तरह से दूसरे देशों को ये समझाया जाए कि वो अपने मतभेद छोड़कर जरा साथ काम करें, क्योंकि इसकी बहुत आवश्यकता है इस समय दुनिया को। We'll once again go back to Yashobhumi, and I'm joined by my colleague Pratibimb Sharma from Yashobhumi. प्रतिबिंब, आप इस वक्त यशोभूमि में कहाँ हैं? थोड़ी देर पहले तो हम आपको स्टूडियो में देख रहे थे, लेकिन इस वक्त आप कहाँ पर हैं यशोभूमि में? अपने इर्द गिर्द, अपने आसपास क्या देख रहे हैं? मैं बता दूं कि जो मुख्य कार्यक्रम है वो 6th फ्लोर पर है, और मैं 5वें माले पर इस वक्त मौजूद हूं, और विभिन्न विदेशी मेहमानों का आना शुरू हो गया है। और बाकायदा अगर कार्यक्रम की शुरुआत की बात करें तो 10:30 बजे लोकसभा अध्यक्ष, जो कि अध्यक्ष भी हैं P20 शिखर सम्मेलन के, वो जितने भी प्रतिनिधि हैं उनका स्वागत करेंगे, और 11 बजे बाकायदा प्रधानमंत्री इस बहुत ही विशेष शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करने वाले हैं। उद्घाटन के पश्चात लोकसभा अध्यक्ष का भी संबोधन होगा, और IPU अध्यक्ष भी इस पूरे वृहद सम्मेलन में मौजूद हैं, उनका भी संबोधन होने वाला है। और इस उद्घाटन कार्यक्रम के ठीक पश्चात प्रधानमंत्री लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मेट्रो से निकल रहे हैं यशोभूमि के लिए। आपको दिखा दें, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं मेट्रो स्टेशन से। और जब बात आती है पूरी दुनिया को एक संदेश देने की, तो कहीं ना कहीं
उस बदलाव की शुरुआत स्वयं से करनी होती है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी हम देखते रहे हैं। उन्होंने कई बार मेट्रो की यात्रा की है और लोगों को ये संदेश देने की कोशिश की है कि आप इन संसाधनों को, जो सीमित संसाधन है हमारे ऊर्जा के, उन्हें बचाने के लिए मेट्रो का इस्तेमाल करें। और यही आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी दिखा रहे हैं। और लोकसभा अध्यक्ष मेट्रो से यात्रा कर रहे हैं यशोभूमि पहुंचने के लिए। यशोभूमि में वो सभी संसद अध्यक्षों का स्वागत करेंगे। 11 बजे से सत्र की शुरुआत होगी। यशोभूमि में प्रतिबिंब हमारे साथ बने हुए हैं और प्रतिबिंब वहां पर क्या कुछ खास नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है? तो प्रतिबिंब से हमारा संपर्क बना हुआ है और प्रतिबिंब आप यशोभूमि पर बने हुए हैं। वहां पर आज P20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचने वाले हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मेट्रो के द्वारा यशोभूमि के लिए निकल चुके हैं। तो और प्रतिबिंब से लगता है हमारा संपर्क रुक गया है। यहाँ पर शीतल, हम बात कर रहे थे उन सत्रों की जिन पर आज चर्चा होने जा रही है। आज शिखर सम्मेलन का आगाज होगा और उसके बाद ऊर्जा पर, सतत विकास लक्ष्यों पर विशेष सत्रों का आयोजन किया गया है। तो आपसे जानना चाहेंगे प्रोफेसर कि हम बात कर रहे थे एनर्जी की, सतत विकास लक्ष्यों की, और साथ ही साथ कैसे एक एक व्यक्ति इन चीज़ों से जुड़े जिससे कि बदलाव बड़े स्तर पर देखा जा सके। जी बिल्कुल, भारत अलग अलग तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो इन चुनौतियों से किस तरह से उलझना है, सुलझना है, उसकी रणनीतियाँ जो है वो सामने ला रहा है। आपने अभी देखा कि जो लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला, वो मेट्रो से खुद जा रहे हैं। तो इसके साथ साथ ये भी थोड़ा सा जानना बहुत दिलचस्प हो जाता है कि किस तरह से भारत की जो अध्यक्षता है G20 शिखर सम्मेलन की, उसका आयोजन कैसे किया गया है। बहुत बार ऐसा देखा गया कि शिखर सम्मेलन का आयोजन जो होता है वो अध्यक्षता के आखिर में होता है। भारत ने ये आयोजन 81 दिन पहले किया। भारत की अध्यक्षता नवंबर के अंत तक चलेगी। बिल्कुल। अध्यक्षता में पहले ही सत्र में, पहले ही सेशन में एक डिक्लेरेशन तैयार कर ली गई, उस पर कंसेंसस बन गया। अब कंसेंसस बनाने के बाद उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, कार्यान्वित कौन करेगा? देश की संसद उनको, हर देश की, हर जो सदस्य देश हैं उनकी जो संसद है वो उसको कार्यान्वित करने वाली है। इसलिए शिखर सम्मेलन में कंसेंसस बनाने के बाद संसदीय सम्मेलन हो रहा है जी। और यहाँ तालमेल बनाने के बाद, जैसा कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि नवंबर के अंत में एक ऑनलाइन शिखर सम्मेलन फिर से होना चाहिए। तो कितनी अलग अलग तरह से, चाहे वो उदाहरण देकर हो, चाहे वो रणनीति बनाकर हो, चाहे वो तालमेल बनाकर हो, जो अपनी अध्यक्षता के दौरान जो दिशा निर्देशन भारत ने देना है विश्व को और इन बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को, उनके अलग अलग पहलू हैं। और उनमें बहुत, मुझे लगता है कि एक अच्छा कैलिब्रेटेड अप्रोच है कि कैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव बनाए और असर दिखाए। और उस नज़रिए से मुझे लगता है ये पार्लियामेंट जो संसदीय सम्मेलन शिखर सम्मेलन के बाद रखना और उसके बाद फिर एक ऑनलाइन शिखर सम्मेलन रखना, मुझे लगता है अपने आप में बहुत ही सटीक तरीका है कि अपने जो दिशा निर्देशन है उसको किस तरह से प्रभावित किया जाए पूरे विश्व को और कैसे उसको लागू किया जाए ज़मीन पर। बिल्कुल प्रोफेसर, ज़रूरी ये है कि हम नीतियां बना रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि उन नीतियों का कार्यान्वयन हो रहा है या नहीं, और उन नीतियों का कार्यान्वयन कौन करेगा? देश की संसदें, क्योंकि लोकतंत्र में संसदों के पास किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में बदलाव करने का अधिकार होता है। जनप्रतिनिधि देश की संसद में मौजूद होते हैं जो सीधे जनता से जुड़े होते हैं और जनता से जुड़े मुद्दों का वो समाधान करते हैं। और जब बात पूरी दुनिया की हो रही है, पूरी दुनिया में वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया जा रहा है और उनके लिए जो नीतियाँ, जो जनादेश G20 देशों ने दिया, उसका कार्यान्वयन सभी G20 देशों में हो। इसके लिए G20 देशों के संसद अध्यक्ष आज एकजुट होने जा रहे हैं और आज
P20 शिखर सम्मेलन का औपचारिक तौर पर उद्घाटन हो रहा है। यशोभूमि में ये उद्घाटन होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। प्रतिबिंब शर्मा वहां पर मौजूद हैं, हमारे संवाददाता, और प्रतिबिंब से हम जानते हैं कि वहां पर क्या कुछ खास नजारा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर पहुंचेंगे और जितने भी G20 सदस्य देशों के संसद के अध्यक्ष हैं, आमंत्रित देशों की संसद के अध्यक्ष हैं, उनका स्वागत करेंगे। उसके पश्चात 11 बजे बाकायदा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और प्रधानमंत्री के हाथों P20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन होने वाला है। और इसके अलावा हम बता दें कि IPU के अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी कार्यक्रम में रहने वाले हैं। लेकिन उनसे ठीक पहले लोकसभा अध्यक्ष का उद्बोधन होगा, उनकी स्पीच होगी और उसके तत्पश्चात IPU के अध्यक्ष भी अपना उद्बोधन देने वाले हैं, स्पीच देने वाले हैं। और इस कार्यक्रम के तुरंत बाद यानी कि उसके पश्चात प्रधानमंत्री तमाम प्रतिनिधियों से बाकायदा मुलाकात करेंगे, उनसे खास बातचीत भी करने वाले हैं। और 2 सत्र विशेष रूप से आयोजित होने वाले हैं और पहला सत्र अगर उसकी बात करें तो 2 बजे शुरू हो जाएगा और 3:30 बजे तक चलने वाला है। सतत विकास के लक्ष्यों से जुड़ा हुआ यह सत्र है और इसमें की नोट स्पीकर की अगर बात करें तो की नोट स्पीकर 6 की संख्या बताई जा रही है और तमाम की नोट स्पीकर्स को 7 मिनट का समय मिलेगा अपनी बात को कार्यक्रम के दौरान, सत्र के दौरान रखने का। और की नोट स्पीकर के अलावा इंटरवेंशन स्पीकर्स भी हैं, 6 संख्या उनकी भी है, लेकिन उनको 7 मिनट की जगह 4 मिनट का समय मिलेगा अपनी बातचीत को पहले सत्र में रखने का। और 1.5 घंटे का तकरीबन कह सकते हैं ये पूरा सत्र होगा। और दूसरा सत्र जो है सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन को लेकर है और हम देख रहे हैं भारत में क्लीन ईंधन को लेकर, ऊर्जा को लेकर तमाम कवायदे हो रही हैं, नए नए कदम उठाए जा रहे हैं। और हमने देखा कि G20 के दौरान भी जो है बहुत बड़ी घोषणाएं इसके संदर्भ में हुई है और तमाम बिंदुओं पर इस दूसरे सत्र में भी चर्चा होगी। अगर इसमें बोलने वाले जो है स्पीकर्स की बात की जाए तो उसमें 6 जो हैं वो इंटरवेंशन स्पीकर्स होंगे, उनको भी 4 मिनट का समय मिलेगा। और 4 जो हैं की नोट स्पीकर जो हैं इस दूसरे सत्र में बातचीत करने वाले हैं। उन तमाम की नोट स्पीकर को 7 मिनट का समय दिया जाएगा, समय मिलेगा और वो अपनी बात उस सत्र के दौरान रखने वाले हैं। इसके पश्चात हम बता दें जिस तरीके से लोकसभा अध्यक्ष मेट्रो के माध्यम से यहाँ पर पहुँच रहे हैं, कल भी उन्होंने मेट्रो को ही माध्यम बनाया था यशोभूमि तक पहुँचने का। शाम को तमाम प्रतिनिधियों को साथ में लेकर वो मेट्रो के माध्यम से ही संसद भवन पहुंचने वाले हैं। और आपको पता ही है संसद भवन के सामने एक विशाल मूर्ति है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की। तमाम प्रतिनिधि वहां पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। और संसद का नया भवन जो बना है तमाम प्रतिनिधि उसका अवलोकन करेंगे, वहां पर विजिट करने वाले हैं। और रात को लोकसभा अध्यक्ष विशेष रात्रि भोज तमाम प्रतिनिधियों के लिए आयोजित करने वाले। ये है आज के दिन भर का पूरा कार्यक्रम अगर बात की जाए P20 शिखर सम्मेलन की। All right, Pratibimb will keep coming back to you and Kriti because the summit will be formally inaugurated at 11 with the Prime Minister's speech. And talking of the speech, when Prime Minister Modi speaks, Professor Singh, the whole world listens attentively, and that is what everybody is looking forward to today. What is your expectation from his speech today? I think it is again going to be a speech which is going to be holistic, first of all, which is going to include all important issue areas. And of course, it's also going to be one more speech where the personal connect is going to be very visible in the speech of Prime Minister, which is usually what makes him such an attractive speaker, not just in India. We were recently, Mr. Prabhu Dayal, for example, was mentioning how Indian Prime Minister is seen around the world. There is an agency in United States called the Morning Consult, which has done surveys on top 18 or 19 world leaders as to how popular they are, not just in their own country, but around the world. And we have seen in the media that Indian Prime Minister has been rated at 76 or 78% compared to the next most popular leader being 40% in terms of popularity rating. So in that sense, the personal connect, whether it is through his speeches or through his gestures, through his conversations that Indian Prime Minister is able to make,
is very significant for promoting Indian foreign policy, diplomacy, and building that engagement around the world. Exactly, and that's what really attracted me. Constantly endeavoring to engage the world. I'll take this to Ambassador Prabhu Dayal. Ambassador Prabhu Dayal, there has been a conscious effort of constantly engaging with the world, and that is what's making the difference. What do you have to say to that? Yes, you're absolutely right. This conscious effort towards engaging with the rest of the world flows from the idea that the world is one family. It flows from the concept of Vasudhaiva Kutumbakam. Because if you neglect any section of the human population on planet Earth, then you are ignoring the fundamental reality that the entire human race is one family, and therefore everyone has to be taken along. The deliberations of this particular P20 meeting have already been set in motion on account of the meeting that was held yesterday on lifestyle for environment, because this aspect is very important for the entire planet and hence for humanity. And as you pointed out during your remarks, deliberations were held on how to promote the idea of a greener and more sustainable future in harmony with nature. Now, this is a concept which needs to be given primary attention, because if we are spoiling planet Earth, then we will ultimately end up paying the price for that. And the Prime Minister, through his numerous interventions on this theme, has repeatedly emphasized the importance of all nations working together and ensuring that we leave behind a better planet for the coming generations. What we do now is going to matter a lot for the future generations. And I think this aspect is repeatedly emphasized by our Prime Minister. I think his focus is on how consensus-based solutions to complex global issues should be found. And I think that during the P20 summit, in his introductory remarks too, he will emphasize this theme, and the entire range of discussions will cover what India emphasizes in this context. बिल्कुल प्रभु दयाल जी, और जैसा कि आपने कहा कि नो वन लेफ्ट बिहाइंड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये नीति रही है कि विकास से कोई अछूता न रह जाए देश में, और साथ ही साथ जब पूरी दुनिया को हम परिवार मान रहे हैं और वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर G20 का आयोजन किया गया, और अब P20 शिखर सम्मेलन की थीम भी है एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के लिए संसदें, तो कहीं ना कहीं जो G20 का जो जनादेश था, G20 में ग्लोबल साउथ को स्थान दिया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ग्लोबल साउथ को G20 का एक हिस्सा बनाया गया। और अब उसके बाद P20 शिखर सम्मेलन में पैन अफ्रीका के अध्यक्ष भी शामिल हो रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे प्रोफेसर कि इसके बाद जब ग्लोबल साउथ के भी एक सहभागिता इसमें नजर आ रही है, भारत के नेतृत्व में ये नई कवायद हुई है, तो कितना महत्वपूर्ण है? बहुत ज़्यादा महत्व है इसका। मुझे लगता है ये सबसे बड़ा निर्णय है कि G20 जो पिछले 20 वर्षों से G20 ही था जी, उसका ढांचा बदल गया है, G21 हो गया है। पहली बात तो ये। दूसरा ये कि ग्लोबल साउथ हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हाशिए पर देखा जाता था, या खासकर अफ्रीका को हाशिए पर देखा जाता था। उनको विश्व के सबसे ताकतवर मंच में सदस्यता दिलवा देना ये बहुत बड़ी सफलता है भारत के लिए, मुझे लगता है। और तीसरी बात जो उसमें बहुत अहम है वो ये कि शायद उनके ऊपर कोई मेहरबानी की बात नहीं है। ये अफ्रीका भविष्य में केंद्र बनने वाला है विश्व का एक तरह से, क्योंकि वो चाहे वो जनसंख्या के नज़रिए से हो या वो विकास के नज़रिए से हो, जो इस शताब्दी के दूसरे 50 वर्ष हैं उसमें विश्व का पूरा ध्यान वहाँ जाने वाला है।
विकास का और जनसंख्या के बदलाव का वहाँ वो केंद्र बिंदु बनने वाला है। इसलिए जिस भी विश्व की बड़ी शक्ति को अपना विश्व स्तर पर प्रभाव बढ़ाना है, अपना विकास बढ़ाना है, उसको अफ्रीका से जुड़ना होगा। और ये नज़रिया भी उस रणनीति के पीछे है कि यदि G20 को विश्व स्तर पर जितनी चुनौतियां हैं उससे यदि लड़ना है, उनको सुलझाना है, तो अफ्रीका के 55 देश जो हैं, और जाहिर है कि ग्लोबल साउथ को उसको साथ लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि आज तक जितनी भी G7 जो ग्रुप है उनकी जो कोशिशें हुई हैं कि किस तरह से सुधार लाएं, वो ज़्यादातर बाजार उनको चलाता था, मार्केट ड्रिवन थे, प्रॉफिट ड्रिवन थे। उसके चलते जो अर्बनाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उससे ये पर्यावरण की चुनौतियां खड़ी हुई हैं। तो क्यों ना ये सभी को साथ लेकर जो एक तरीका है उसको अपनाया जाए, ताकि सभी आवाज़ों को सुना जाए। और उसमें ये जो संसदीय अधिवेशन है, वो सम्मेलन है, वो बहुत ख़ास हो जाता है कि जब तक आप सबको साथ लेकर नहीं चलते हैं तो विकास शायद कुछ एक हिस्सों का होता है, चाहे वो कुछ देशों का हो या देशों में कुछ लोगों का हो, उससे बहुत नई समस्याएं खड़ी होती हैं। जो विकास अटपटा होता है उसको बराबर से सब लोग उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। तो ये अफ्रीका और ग्लोबल साउथ को जोड़ने से भारत की छवि तो बदली ही है, जाहिर है, पर मुझे लगता है कि पूरे विश्व स्तर पर जो चुनौतियां हैं उनसे लड़ने की जो हैसियत है, मंशा तो हमेशा थी, पर हैसियत जो है उसमें भी बहुत फ़र्क नज़र आता है और उसके असर नज़र आने शुरू हो रहे हैं आज से ही। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इससे वैश्विक स्तर पर जो भारत की जो छवि है वो और मजबूत हुई है, जहां अफ्रीका उसका एक बेहतरीन मित्र है। और जो नज़ारा हमने G20 के दौरान देखा कि प्रधानमंत्री किस गर्मजोशी के साथ सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मिले, और कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर भारत की मजबूत स्थिति हमको नजर आई। भारत का यश, भारत की कीर्ति पूरी दुनिया में बढ़ रही है। और अब P20 शिखर सम्मेलन में भी we will discuss this further, particularly the Africa angle that you mentioned. But right now we'll be going across to Yashobhumi, and we're joined by my colleague Kriti. She has some guests there with her. Kriti, over to you. Well, thank you so much, Sheetal. And we've been talking about greater representation everywhere. And of course, a very important angle is mainstreaming of gender, ensuring gender parity in our parliaments across the world. And joining us right now is a very special guest, Senate of Mexico, Ms. Carrera. Ma'am, welcome to Sansad Television. Thank you so much for talking to us. We also have a translator with us who would be translating in English for us. Ma'am, we've been talking about greater gender parity. We've been talking about women representation in the arena of politics. How do you see it? La representación de mujeres en la política, ¿cómo lo ve? ¿Cuál es su opinión? Nosotros desde México quiero comentarles que se han venido impulsando políticas públicas de gran importancia, porque por primera vez en México existe la paridad 50 y 50, y eso nos permite que las mujeres, que un ejemplo, su servidora el día de hoy, pueda participar en estas cumbres. Let's also hear in English. What I would like to say is that in Mexico, for many years, we have been working on gender equality, and we have a 50% representation of women in Parliament, and that's why I, as a woman and member of Parliament, am representing the Parliament in this meet. Also, ma'am, you were one of the lead speakers in Parliamentary Forum for Lifestyle for Life that was actually launched by Prime Minister Narendra Modi of India. How do you look at that concept? La ponente en la reunión para Lifestyle para Life, ¿y cómo lo ve? Es un programa que el primer Modi ha empezado. Sí, definitivamente el grupo de los 20 tenemos una mayor responsabilidad por el papel que venimos jugando a nivel mundial, y es en nosotros en quien recae el poder verdaderamente atender los derechos de lo que es nuestro medio ambiente. Me parece que eso es importante. Let's hear the English version now. Yes, we as the G20 are a very important group, and this is a good opportunity for us to attend to matters which deal with the environment. This is a very important matter, and it is up to us to deal with it. Thank you so much for talking to us, and thank you so much for joining Sansad Television, Parliamentary Channel of India, ma'am. Over to you, Sheetal, in the GRG studio. Thank you for those conversations, Kriti. And as we were talking about Africa,
you said, you mentioned Africa to be at the crux in the second half of this century. Would you elaborate on that? Yeah, because as we say, demographic and development transformation is going to happen in Africa because population is extremely young. The median age in Africa, and Africa is 55 nations, we usually take the whole continent as one, is only 18 plus years compared to 28 in India, 38, 39 in United States and China. So population in Africa is extremely young. That means for next 60, 70 years, they are going to have this trend of young population. And if Africa is able to receive technology, receive investments, it is going to give much better per dollar returns, as we say, to any investor that engages with African countries. So Africa will see increasing number of countries going and engaging and investing in those countries. And very often we say development is panacea for peace. And if development takes place, some of the perennial problems that because of colonial legacies Africa has seen may also over time see greater stability and peace. And that would mean that development focus in Africa will become much more stronger. And Africa, which is often seen, I'm sorry to say, but as a liability at global level, that they are not able to keep up with whether it is sustainable development goals or it is other targets that world has, will be able to come on stage and participate as equal. And that is why you see many countries are increasingly getting interested in Africa. But let me also add what is unusual again about India. For example, last 20, 30 years have seen China as a new player, as a major investor in Africa. But China's relations are largely commercial, investment driven, trade driven, profit driven. India's connection with Africa is very different. India's connection with Africa is because of so many Indians that moved to Africa during colonial times. And many of them are today very successful in Africa. They are in many countries very powerful business people. In some of the countries they are even participating in politics. Second, I think the most symbolic and iconic connection is Gandhi. Yeah. Mahatma Gandhi's connection puts Africa, at least certain countries in Africa, very closely aligned with India. And this connection was reinforced during non-aligned movement. Several leaders in Africa were very closely connected to India-led non-aligned movement. And that has seen now, for example, some of those people-to-people connections, cultural connections, political connections, historical connections, which are not limited to only commercial connections, are being reinforced because starting from 1950s itself, India had started something called ITEC, Indian International Technology and Economic Cooperation Program, which is today called Developmental Partnership Programs. And the focus right from beginning was not to give them a fish to eat, but to teach how to do fishing, to enable them, something that we today call capacity building. We'll come back to this. We'll again go back to Yashobhumi. Kriti has some more guests with her. Over to you, Kriti. Kriti, are you connected? Over to you, Kriti, if you're connected. Kriti, are you connected? India's G20 presidency and in fact the P20 summit, we've been talking about a very integral component, that is the participation of African Union. In fact, Africa accounts for 17% of the global population and it is expected to touch 25% by the year 2050. And it was India's initiative to include African Union in the G20 grouping. And right now joining me is the delegation, the senators and members of parliament from Nigeria. So welcome to Sansad Television and thank you so much for joining us. We are the Parliamentary Television of India. Sir, how is the experience so far being here in India, participating in the P20 summit? Thank you very much.
experience we had in the participating in the G20 Parliamentary Summit. Yesterday we had the free inaugural kind of meeting which centered on discussion on the issue of global global and environmental sun. And today, when inaugurated, the meeting will continue. And from what has been said by several speakers, what they want actually is the execution of the agreement of 2015 in Paris, and also some of the African countries and other parts of the world are saying that the promises made by the G20 of by mobilizing about 20 billion to checkmate the issue of the environment, and also to have a kind of synergy between the member states of 20 and other invited to ensure that the environmental, more especially seen by 2020, they have take out the cubic of 2 billion out of the circulation. So we as members of the parliament, our own is to ensure that we have given support to the executive, and at the same time to ensure that full implementation of this by zero emission, though every nation is doing its own best to ensure that they reduce the emission by the 2030, to ensure that about 2 billion was taken out of the circulation globally, which we are working. Different speakers will spoke on what their nation is doing, what collectively Africa we are doing to ensure that this actualizes. And we appreciate the hospitality of India, ranging from the airport down to our hotel, down to the convention center. The government and the organizers has done very excellent job, which we really appreciated, and we will remain as they were saying, that the same people, the same art, and the future is one. Absolutely, so we are ready as parliamentarians to give our own contribution as Nigerians and by extension Africa. Thank you so much, sir. We are also very happy to welcome you. Also, if climate change is a very important topic during India's G20 presidency, another focus area has been gender sensitization, gender participation, and of course, women-led development. And joining us right now is the Senator of Nigeria, ma'am. Welcome to Sansad Television. Ma'am, how has been the African experience so far as gender parity in Parliament is concerned? Because Parliament of India has passed a bill providing greater representation to women in Parliament. Thank you very much. I want to also appreciate the hospitality of the Indian government at this summit, the P20 Parliamentary Summit, as my colleague senator has said. On behalf of all our senators here and members of the House of Representatives of the National Assembly of Nigeria, we are very delighted to be here to participate in this One Earth, One Family, One Future, and to say that the participation of women in Parliament is still low, and we are really looking forward to increased participation because of the role of women, you know, and the fact that women always have that side of them. They bring on to situations that bring solutions and bring lasting solutions and sustainable development. So we are really happy that joining you in this and taking together resolutions towards our future, one future, that will all be marching forwards to this one future of greater participation of our women in Parliament. Absolutely, ma'am. India stands for Vasudev Kutumbakam, which is one earth, one family, one future. Back to the GRG studio, Sheetal. And I'll go across to Ambassador Prabhu Dayal, take it forward from here. Ambassador Dayal, we see a beaming, newly empowered African parliamentary delegation at Yashobhumi. Your views? Well, you know, Professor Swaran Singh has emphasized how India, as the G20 president, has changed the very nature of the G20 by, of course, making it the G21 and very significantly giving representation to the African Union. Professor Swaran Singh also rightly pointed out that the Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, was chosen by a very prominent New York magazine
as the most popular leader in the world. Now, I would also recall that when the Italian Prime Minister visited earlier this year in January, she publicly said that Prime Minister Modi is the world's most popular leader. Very significant is the fact that by showing his own leadership qualities, Prime Minister Modi has been able to also bring into focus the leadership role which India can play and should be allowed to play even at the United Nations. You know, the United Nations was formed in 1945, and the world has changed since then. Today, India's place in the world is among the top countries in the world, and therefore it is very strange and very unfortunate that India does not enjoy the status of a permanent member of the UN Security Council. So by being able to project not just his own leadership qualities, but by also projecting India's leadership qualities and India's leadership potential, the Prime Minister has been able to focus on the need for reforming the global system, in particular reforming the United Nations. And I think this fact has been taken into account by a number of countries. Professor Swan Singh was pointing towards the fact that China's profile in Africa is not one of just sharing experiences, but China wants to exploit Africa. Exactly. India's attitude is very different. So at this crucial juncture in mankind's history, India can play a very important role as a permanent member of the UN Security Council. And I must tell you that the world press has been writing about it. This fact has drawn the attention of thinkers from different parts of the world. Of course, the obstruction is China, because any attempt to bring in India gets a sort of disapproving, gesture from China. So China is a part of the global problem, and India is a part of the solutions. Exactly. बिल्कुल Very, very, प्रभुदयाल very जी, aptly और अब put. आते हैं प्रोफेसर आपके पास। हम पूरी दुनिया को सॉल्यूशन देने की बात कर रहे हैं। चुनौतियां तो हैं पूरी दुनिया के सामने, लेकिन उनका समाधान क्या होगा, भारत के नेतृत्व में उसी पर विचार विमर्श किया जा रहा है। कैसे उन नीतियों को अपने अपने देश में लागू किया जाएगा, उसके लिए G20 देशों के संसद अध्यक्ष एकजुट हो रहे हैं। और बात करें यहाँ पर अगर लैंगिक समानता की, अभी नाइजीरिया की एक महिला प्रतिनिधि से हमारी कृति मिश्रा ने मुलाकात की, उनसे बात की। वहाँ बात हो रही थी महिला रिजर्वेशन की, महिला आरक्षण की, और भारत ने एक नई तस्वीर पूरी दुनिया के सामने पेश की है 33% आरक्षण देकर। और अब आप क्या संदेश, आपको क्या लगता है कि भारत क्या संदेश पूरी दुनिया के सामने देना चाह रहा है? अभी बात करें तो दोनों एंकर आज दर्शाते हैं कि भारत में महिलाओं का क्या स्थिति है या क्या उनका योगदान है भारत में। पर सीरियसली बात करें तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि पार्लियामेंट ने जो 33% रिजर्वेशन किया है विमेन प्रतिनिधियों के लिए, पर ये लगातार भारत का दर्शन है, उसी को दर्शाता है। बहुत से विश्व की जो बड़ी शक्तियां जिनको हम आज कहते हैं, 90 के दशक तक वहाँ महिलाओं की वो स्थिति नहीं थी जो भारत की संविधान में पहले से ही तैयार कर दी गई थी। वोट देने का अधिकार हो, प्रतिनिधित्व का अधिकार हो, और जो धरोहर है, चाहे वो भूमि की हो या जो धन की जो इनहेरिटेंस जिसको हम कहते हैं, अलग अलग तरह से कानून बनाए गए थे कि स्त्रियों को, महिलाओं को बराबर का दर्जा मिलना चाहिए। और उसी की एक कड़ी ये कानून है जो हाल ही में पास किया गया है। तो अलग अलग तरीके से उसको देखा जा सकता है। एक तो ये कि भारत की संस्कृति में, भारत के दर्शन में महिलाओं का स्थान बहुत अलग रहा है। और जब भारत उस नज़रिए से ये बात सामने लाता है अपनी रणनीति में, नीति में, कानून में,
तो उसका असर मुझे लगता है चाहे वो अंदरूनी तौर पर भारत में हो जी। या भारत की उदाहरण का दूसरे देशों में हो। आपने अभी सुना कि नाइजीरिया की सांसद कह रही थी कि वो भी चाहते हैं कि उनके अपने संसद में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो बढ़ना चाहिए। तो भारत किस तरह से अपने इतिहास से जोड़ता है इस सोच को और फिर उसको कार्यान्वित करता है आज के परिप्रेक्ष्य में, और वो उदाहरण किस तरह से दुनिया को आज नज़र आती है। और इसलिए भी क्योंकि भारत आज विश्व का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। और मैं छोटी सी बात जोड़ दूंगा क्योंकि मैं एम्बेसडर साहब से थोड़ा सा अलग सोचता हूँ ये भारत की जो सदस्यता है, स्थायी सदस्यता। In fact, I was about to come to that. Yeah. Please. Please go. Are we inching close to that? Do you see us inching close to that? I think I want to mention this because I think slightly different than Ambassador Prabhu Dayal on this. India's influence, India's visibility, India's acceptance levels have completely transformed. So for me today, it is absolutely not a problem for India to be sitting in UN Security Council and holding a permanent seat. I think today the onus lies on UN Security Council to sustain its credibility, to ensure that world's largest population country, fastest growing economy, going to be world's third largest economy, world's high-tech power, should be given that place. And I think therefore to me the onus is no longer with India. India doesn't have to worry about taking that permanent seat in UN Security Council and holding a veto. It makes the question mark on the credibility of UN Security Council today, whether they are representative of the world that they wish to lead or they do not wish to really include countries that are changing the world today. India is not changing its own internal situation only. The whole social transformation driven by technology is a reflection of 17% of the world is already changing inside India. But so much of the world is also changing because of India. And if UN Security Council wants to keep India out of it, that's their problem. That's not India's problem for me. They will only gain out of it, considering the approach that we have, the mindset of providing solutions. Their credibility is in question, is what I'm saying. Exactly. बिल्कुल, भारत ने अपनी स्थिति पूरी दुनिया में इतनी मजबूत बना दी है कि अब दुनिया भारत को पूछेगी। भारत हालांकि सबको परिवार मानता है और चाहता है कि जो वैश्विक चुनौतियां हैं उनके समाधान में सभी लोग आगे बढ़ें और आपस में जो नीति जिस देश में बेहतर हो रही है वो आपस में उन नीतियों का, उन समाधानों का आदान प्रदान करें और पूरी दुनिया विकास की ओर बढ़े, मानव केंद्रित विकास की ओर बढ़े। बिल्कुल ठीक आपने कहा। उसी में ये जो जितना ट्रांसफॉर्मेशन भारत में अभी आ रहा है वो मुझे लगता है कि वो उदाहरण दुनिया में नज़र आनी शुरू हो गई है और एक के बाद एक देश आज न केवल भारत के नेतृत्व के प्रति उत्सुक हैं पर भारत में सामाजिक तौर पर जो बदलाव आ रहा है, जो हमारे युवाओं की एक तरह से, चाहे वो एस्पायरिंग यूथ की बात हो या फिर भारत के डायस्पोरा की विश्व स्तर पर अलग अलग जगह जो उनको नेतृत्व मिल रहा है, चाहे वो दूसरे देशों की राजनीति में आप देखें जो भारतीय मूल के लोग हैं वो किस तरह से प्रभावी होते जा रहे हैं। जब बाज़ार में आप देखें जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस में भारतीय लोगों के, भारतीय मूल के जो लोग हैं उनका जो नेतृत्व है, तो ये पूरे भारत की सोच, संस्कृति, दर्शन का ही एक तरह से मान्यता है विश्व स्तर पर। वो अलग अलग तरह से पूरे विश्व में नज़र आती है और शायद उसी के चलते क्योंकि भारत की विदेश नीति आज भारत के दर्शन को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, उसकी जो मान्यता है, उसका जो प्रभाव आज विश्व स्तर पर है वो बहुत अलग नज़र आता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये एक बदलाव ऐसा है जिसके लगातार बढ़ने की हम उम्मीद कर सकते हैं। इसलिए भारत को केवल ये नहीं सोचना होगा। आप देखें भारत के प्रधानमंत्री आज आने वाले 1000 सालों की बात करते हैं। बिल्कुल। तो यही जो सोच हमारे दर्शन, भारतीय दर्शन की है, उस पर यदि आप उसको लेकर आगे बढ़ते हैं तो आपकी सोच पूरे विश्व स्तर पर होती है और बहुत लंबे नज़रिए से आप दुनिया को देखते हैं कि किस तरह से आने वाले समय में आपने क्या दिशा निर्देशन या क्या योगदान देना है विश्व स्तर पर और किस दिशा में भारत को ले जाना है। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये उदाहरण के तौर पर पेश करके अपनी सोच को साझा करने से और दूसरी जो चाहे वो तकनीक को लेकर हो, निवेश को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, आज हम नॉन अलाइनमेंट से ऑल अलाइनमेंट की बात करते हैं कि पूरे विश्व से हम आज जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी परिप्रेक्ष्य में मुझे लगता है ये जो संसदीय सम्मेलन हो रहा है, संसदीय अधिवेशन जो
भारत में अभी हो रहा है, वो सभी बड़े देशों के जो प्रतिनिधित्व जो करते हैं, सभी संसद जो अपने अपने देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं और वहाँ की क्या रणनीति नीति होनी चाहिए, क्या किस तरह के कानून बनने चाहिए, क्या दिशा निर्देशन ये सब सदस्य देश देना चाहते हैं अपने राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें भारत कैसे जुड़ सकता है, भारत क्या योगदान दे सकता है, क्या दिशा निर्देशन कर सकता है, उसी को आगे बढ़ाने की एक कोशिश है। और मुझे लगता है कि लगातार भारत की जो छवि है बदली है, भारत का प्रभाव बढ़ता हुआ नजर आता है और उसी में ये एक कड़ी है जो भारत में ये संसदीय सम्मेलन हो रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर हमसे जुड़ने के लिए और इन सभी मुद्दों पर विस्तृत रूप से जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज P20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत होने जा रही है यशोभूमि से, और यशोभूमि में क्या कुछ खास होने जा रहा है इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। संसद टीवी का स्टूडियो यशोभूमि में बना हुआ है, वहां पर हमारे संवाददाता विभिन्न प्रतिनिधियों से भी बातचीत कर रहे हैं और हम जो मुद्दे हैं जिन पर आज चर्चा होने जा रही है उनकी एक विस्तृत तस्वीर आपके सामने पेश कर रहे हैं। जूम पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ गए हैं पिनाक चक्रवर्ती, पूर्व राजनयिक हैं, साथ ही संजय भट्टाचार्य भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। Absolutely, Shalini. So it's a big day today, as my colleague rightly said. Since 8 o'clock, we've been getting you live coverage. Good morning, viewers. I am Tina. From here on, I am joining my colleague in getting you every detail of the big day today. The Parliamentary 20 Summit officially begins today. The Prime Minister will be inaugurating the summit. And as my colleague was telling you, we have one studio at the summit venue, the Yashobhumi, from wherein my colleague Kriti has been reporting since morning. Kriti, over to you. Thank you so much, Tina. And we've been speaking to the honorable delegates, to the honorable speakers of different parts of the world. And joining us right now is a very important delegation, the Omani delegation. Welcome to Sansad Television, all of you, and thank you so much for joining us. So you've been here. Yesterday, there was a parliamentary forum on life, which is for sustainable development and sustainable lifestyle. Of course, we've been talking about India's G20 presidency, and now India is hosting the P20 summit. How has been the experience so far? The G20 experience in India has been just overwhelmingly good. India's done a phenomenal job. The New Delhi Declaration was the culminating and the crown on the so-called G20 hosting by India. And I think going forward after yesterday's parliamentary session on life, it's evident that the parliament will have to take, all parliaments will have to take a leading role in orchestrating the movement of lifestyle change, of a transition from being an energy consuming to be an energy saving kind of practice. And I think going forward, this will have to make the difference, and this will have to be adapted and imbibed by every country and every parliament. Absolutely, sir. Since this is a very important forum for sharing the global best practices, and one of the themes also focuses on public infrastructure for public good. Yes. I want to know about Oman and the experience in terms of technology, public infrastructure, the digital infrastructure. See, from the public infrastructure point of view, the hard infrastructure, Oman is probably one of the most developed countries in terms of infrastructure is concerned. In terms of digital infrastructure, we feel that we have a country and a friend in India who's going to help us lead the way in terms of the digital transformation. Today, digital infrastructure in India, especially over the last 10 years, has contributed so phenomenally to its GDP growth. And I think this is something, a learning on a page of the book that we'd like to imbibe ourselves in Oman. And I think adapting a digital infrastructure for all the stature of people around the country is going to be a new game changer in making life easier for us in Oman as well. Finally, sir, the big takeaways for you in last 2 days from India. Parliament, the largest democracy in the world, also has a phenomenal parliament and a new building. It's a new paradigm change from where you were to the new building, which symbolizes the new India, the new democracy of India. And I wish you all the best. Thank you so much for joining us, and have a great stay in India. Well, Tina, you've been hearing the global voices on our screen. And of course, we'll provide continuous coverage of the P20 summit to our viewers. Back to the GRD studio now. Thank you, Kriti. We'll keep coming back to you for